Today on the show, we have a guest who became an engineer and an MBA and then decided to become a chai wala. For a while, I thought his name would be either engineer chai wala or an MBA chai wala. But I only realized he's none other than founder of Chai Thela, Pankaj. So today, with Pankaj, we'll be sharing insights on how a QSR system, especially a chai business, works. So, hi Pankaj, welcome to the show. Thank you, Angit. Thank you so much. So Pankaj, see, I understand India is obsessed with chai. But how did you got obsessed with chai? Interesting. So I tell you honestly, Ankit, I was never obsessed with chai. So if you see, when I used to go with my friends, hang out with friends in engineering college days, I was the only guy who used to drink nimbu pani or some other drink, and rest of the friends were drinking chai. So I was never obsessed with chai, never a regular drinker of chai. But then I got obsessed with the logic of selling chai because I realized this makes a good business sense. और आपको क्या अच्छा लगता है इससे फर्क नहीं पड़ता. ये फर्क इससे पड़ता है कि मार्केट को क्या चाहिए, what your customer wants, and if they want something, then you should sell that stuff. So I realized that India is a big chai market. We are the second biggest exporter of chai, consumer of chai. Chai is the second most consumed beverage in the world after water. Beer is third, by the way. Interesting. Yeah. So I realized that this makes a good business sense. People want chai. Chai is a sign of hospitality in India. Somebody comes at your home, you offer chai. It's a sweet way of asking bribe also. यार मेरा चाय पानी देख लेना. So I realized यार चाय तो इंडिया में बिल्कुल DNA में भरी हुई है. So why not organize this market? And that's where the idea of selling chai came in. There were other multiple factors in terms of technicality of the business. Beverage is easy to scale as compared to food. I was running a food business earlier. Then I realized that beverage is easy to scale. Okay. For example, if you sell burger, you have to have a burger, you have to have a patty, you have to have that frozen patty manufactured in a particular facility. Then that it goes through a temperature control van to a particular store. A lot of supply chain issues are there. If you want to make chai, all you have to send is just a cup, sugar, tea leaves, and you can easily procure milk on your local side and you can make tea. So you can scale it to any part of the world without thinking of the logistic and supply chain. So I realized it makes good business sense to organize this business, and that's where I got obsessed with chai. Wow. And eventually got so obsessed with chai कि जब चाय की हम लोग रेसिपीज डिजाइन कर रहे थे, दिन में 50-60 बार घर में चाय बनती थी. निकोटीन का नशा सा हो गया था. माय वाइफ वाज annoyed कि भैया तुम इतनी चाय मत पिलाओ, दिन में हम परेशान हो गए. So that sort of experiment we did. So eventually got obsessed with chai, but more around selling or creating a business around chai, but not as a product in consumer side. Interesting. You know, last few years, this whole concept of chai and I would say organized chai brands have mushroomed, and there has been some controversies around this space as well, which from as an outsider, made me think often that is it really a sustainable industry or is it just a fad? This applies to every industry now. That there would be some controversies in the business, in the format, in the industry, but it doesn't mean that the industry is not sustainable, the business is not sustainable. Every business is sustainable if it is executed well. So if you see the economics, unit economics of chai, I mean, depending upon what format you're doing, either it's a cafe format or it's a stand stall format, I think if you execute it well, you'll make money in every business. Controversies are it's a byproduct. In every industry, it will happen. Some or other way, there are some sort of black sheep which will always be there. But I fundamentally believe that this is a sustainable business model if executed well at the end of it. Interesting. See, you know, we understand, and you rightly mentioned there is this cafe chai and there is this Thela chai, not necessarily Chai Thela, but Thela chai. How's it different? How's a chai at a Thela wala different from chai at a cafe, and how's the audience different? Why certain people choose certain over others? So I think this is a pure case of utility versus experience framework. If you see that, we believe that we want to target the audience where there is a captive audience
who's looking for a utility. I want chai. At the end of the day, maybe I'm working in an office environment and I want a break. So I will go downstairs. I'll pick up a chai, take a break with my sutta, whatever it is, and I'll go back. That time I'm not looking for experience. It's a pure utility. So we realized that let's go to a place where there people have a utility of the product rather than creating an experience around it. So it's a pure utility value conscious proposition we had. That in office area, if you have a stall next to your office, we are giving you 15-20 rupees chai, which is you can consume daily when you are taking a sutta break. If it escalates to 100 and 150 rupees, you take 3 times sutta break, then it's at $450 you can't spend every day on chai. Right? So we were there on the captive audience place like hospitals. If somebody is coming to a hospital, we had a store there, you can consume chai. We were there on airports, we were there on highways. We were never there in any place where there was not any captive audience. So that was the whole format. If you see, there's a cafe format. It's also a reasonable business model. A lot of players has done and executed it very well, including Chaios and Chai Point. So there people, if you see from a cafe point of view, people are looking for an experience. So chai pe charcha hoti hai. So people want some conversation. They want to meet somebody. They come to the cafe. And the chai or a coffee is just an enabler to the conversation. It is not the pure play proposition to come to the cafe. You want to meet somebody, you want to date somebody. And the notion is that if you want to date somebody, you generally go for a coffee because you don't ask, let's go for a cup of chai to a girl. It's not that aspirational in its nature. So I realized that this cafe model is more around experience around the tea. It's a conversation sitting and everywhere around. And our proposition was more around utility, a Thela, which is giving you a hygienic format of chai where you want to consume it on a multiple times in a day. So that's how I'll differentiate utility versus experience model. But tell me, Pankaj, when did you decide or realize that you have to freeze upon this utility piece and not the experience piece? How did you come up with that decision? How did you really understood the economics and understood the customer more importantly? What kind of customer you want to target, why do you want to target them, etc. So I tell you that everything boils down to a middle class DNA, which was there inside me. So we Indians, middle class DNA is there, which is always a value conscious DNA. If you see Indian customers, they are always value conscious. थोड़े में थोड़ा सा देना और बहुत कुछ मिल जाए भाई. 4 रुपए देने लेकिन 10 रुपए का काम मिल जाए. So we realize that if India is that big a market where value consciousness is more, so we want to focus on this segment, which is mass market. And that's where we decided that we will keep it as a utility based product or offering. So we decided that at the end of the day, if you go to an office, you take 5-4 breaks. You want tea. At the end of the day, it's a synonym, chai synonym with basically break. So you can't say that every time I'll come and pay $100 and sit in a cafe. I don't have that much of time as well. So I'll just go to a nearby stall, have my cup of chai, take a sutta and go back. So I see that most of the market where utility was there, it's a very big market. So if you talk about a cafe market, maybe you can come up with, let's say, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 sort of cafes in India, let's say tomorrow, looking at the current scenario. But if you talk about Thela, where actually chai is, then it goes up to lakhs at the end of the day. So if you see in India, every 1 kilometer radius, you'll find 2-3 average chai walas standing where people are crossing by and they are giving them a chai. So we realize this is a big market. Also, from a frugality point of view, low investment and quick returns were there because you can easily set up a Thela or a small kiosk format within a budget of 3-4 lakh rupees, goes up to 5-6 depending upon the parlor format. But it's like frugal approach, quick returns and more scalable format. So that's how we decided we want to go for it. We experimented it with our first store in a corporate cafeteria. That was our first store in Ericsson in sector 62 Noida. That's where we started. And eventually within a 3 or 4 days span, we were selling almost 800,000 cups a day. Oh wow. Yeah. So I realized people want value. They don't want to go to an outside Thela, which is not hygienic. I don't know what kind of water he is using,
what kind of sugar he is using. Mm. But if you get the same preposition just for 5 rupees extra, maybe you're paying 5-10 rupees there and I'm giving you at 15 bucks, but a reasonable model where we are using sulfurless sugar, it's a nice hygienic cup, everything in a hygienic situation. I'm giving chai to make a lot of good preposition in terms of value offering, and it started clicking day one. Wow. And that's how we decided that after that we experimented with second store in another corporate IT cafeteria, and third, after 3 model which was successful, we realized it's a product market fit is there. People want it. Let's scale it in the same manner. So that's how we landed on the utility part and not going for a cafe format. Interesting. So, do over the journey it ever come across you that probably you need to change from this utility to experience, or probably once you freezed your customer in positioning, you were thorough it all throughout the journey? So I'll be very honest that over a period of time we kept on thinking that whether we should also experiment with the cafe model. Shall we go for another format or not? But eventually we realized that there is always a brand positioning, right? If I say I'm a Chai Thela and I'm giving you hygienic and authentic tea at a reasonable price, so that's my USP. That's my positioning of the brand. Now you can't go that the same brand is also have done a lavish cafe, and then probably you can come there and I'll charging you 150 bucks and here I'm charging you only 15 bucks. So there's a disparity because the product remain the same at the end of the day. So we realize if there's a positioning which we have created over a period of time, let's not deviate from that positioning. Let's focus on the same positioning, keeping it as low as possible in any format where we go. And let's give value to the customer. Because experience anyway, there are a lot of players which were doing it. And we never want to compete there with them. For multiple reasons, if you see from an investment point of view, opening up a cafe is somewhere 20-30 lakh rupees game. Instead of opening a Chai Thela could be 3-4 lakh. So in a cafe versus a Chai Thela, I will open at least 6-7 Chai Thela versus one cafe. So I realize that even if I make some mistakes and something doesn't click, so maybe the cost of that failure is not that high in our Interesting. and it is more scalable. Scalability was big sort of motivation that we can scale it to any part of the world. We can scale it to railway station. We can scale it to every part of the India you talk about. It was easily scalable. So we realized that if we want to do a business which is scalable, let's stick to this format only. And that's why we landed and we decided to stick to that utility part. Interesting. But if I ask you to define who's the customer, that ideal customer profile जिसके बारे में हम सब entrepreneurs बात करते हैं कि अगर हमें define करना है ये हमारे ideal customer है, what would that be for Chai Thela? So I think interestingly, chai is the only case, maybe I'm right or wrong, I don't know, but chai is the only case in which everybody fits in. So I have realized that there would be people who will come out of a BMW and still go to a roadside thela for just for a quick chai while they are driving and having fun. So I realized that it was very difficult to put up a model there that who is my ideal customer. Everybody wants chai, and if somebody sees that it's a reasonable chai in a very hygienic environment at an affordable price, even somebody sitting like in a BMW will come and have it. So we have a lot of stores on highways, and every time I see that even a Alto guy versus a BMW guy, both are coming to our stalls and they're having tea at the end of the day. The beauty is that, so I met this gentleman, Mr. Bakshi, who was once upon a time the master franchisee for McDonald's in India. He founded McDonald's in India, Mr. Vikram Bakshi. And he told me this very interesting thing that when we opened McDonald's, the beauty was one of my friend came to visit me. He was having burger with me and his driver was also having burger with me. Right? So his driver could also, auto wala could also afford a 25 rupees burger. So if you do or give a value in less amount, everybody would appreciate it. Be it a BMW guy or an Alto guy or an auto guy. Everybody would appreciate this. So that's where we realize that we don't have a particular profiling of a customer who fits in and who doesn't. Anybody who wants a chai and he sees that it's a reasonable hygienic chai will come to us. So it was very, very open 360 degree. We never made a framework out of it, to be honest. But when you decide to open up
Chai Thela at a place, how would you evaluate, either based on the people who are coming to that area, or, what were the driving factors for you to decide that we should open a Chai Thela here? Great. So I think this is a fundamental of retail. When you open a store anywhere, you identify what is the right place. Because say, Vikram Bakshi told me another thing which was very important. He said that in retail, there are only three critical things which matters. First is location, second is location, third is location. Nothing else. आप अपना shop कहाँ खोल रहे हो? Imagine if you today open just one chai in Ayodhya today, the Ram Mandir which is there, and we have to say Jai Shri Ram also. So I think अब वहाँ पे एक ही चाय की दुकान है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, चलनी है. Right? You open a tea stall tomorrow at airport, there's only one tea stall and everybody is passing by, they will take it. So location is very critical when you open a store. We realize that it's take a lot of brand building exercise, money to first create a brand. McDonald's खुला है तो सब लोग आ जाएंगे, अभी किसी और बर्गर के नाम से खोल तो कोई नहीं आएगा. मैंने कहा हमारा तो उतना बड़ा ब्रांड है नहीं यार कि लोग जानते हैं, तो हम तो ये रिस्क लेंगे नहीं कि कहाँ जाए कैसे करें इतना, हम वहाँ चलते हैं जहाँ लोग हैं. So we took very different route. We thought we will do only stores where there is a captive audience. IT पार्क है, 10,000 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ खोल देते हैं भाई. सिंपल. हॉस्पिटल है, रोज डॉक्टर आते हैं, पेशेंट विजिट करने आते हैं, पेशेंट के साथ 2 रिलेटिव आते हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए मेंटल, भैया यहाँ खोल दो, वेट करेंगे वो लोग जब तक अपने पेशेंट का चाय पी लेंगे. तो ये मॉडल समझ में आता है अपने को. So we went to very captive audience place, highways. People will take a break. Anywhere there is a break station, we will open a Chai Thela. So that somebody wants to take a break for chai, they will come have chai and go. So we were very sure that we don't want to open in retail format anywhere where there is no captive audience. I was never a big fan of high street. Where you open in any market, then you have to pull the crowd that we have opened a shop here. You have to do that branding exercise, marketing exercise, pamphlet distribution. I said, we don't know that because we don't have that much of money also. We want to play very frugal approach. And that's why we decided to only open stores where there was a captive audience. एक चाय की इकोनॉमिक्स क्या है? एक चाय जब आप चाय ठेला पे बेचते हो, what is the price to make it? What is the price to sell it? And typically, how does the economics of a store works in a month? And maybe take a random example or a specific example of a particular Chai Thela store that you were running, and explain me the economics of it. I think, Ankit, the rule in this industry, food industry, F&B, is fundamentally same everywhere. Either you're selling chai, burger, dosa, anything. The fundamental is 33, 33, 33. So 33% should be your food cost, not more than that. 33% should be your rentals and manpower cost, including your utilities like electricity, water consumption, and 33% should be your profit. So this is a thumb rule which is there across every industry being followed. Now, if you talk about, let's say, there's a format where, let's say, for example, Starbucks, which is selling coffee at, let's say, $300. So maybe their rentals are a little higher. They are paying for Wi-Fi, you're paying for, that is space. So, but eventually, 33 is a thumb rule. So, I'll give you an example. So, when we used to run a store anywhere, so we used to calculate what sale we can do, anticipate, and what sort of rental we can afford. And if it matches, we used to open the store. So, let's say I say that I can easily sell 1,000 cups a day here. For example, in a corporate IT park, I'll say 1,000 cups in a day to 15 rupees a day, 15 rupees a cup, eventually 15,000 and 5,000 more with food and something like that. So maybe I can do 20,000 rupees a day, say, calculating into 22 days because 8 days it will be shut down, Saturday, Sunday. So I'll say 4.5 lakh rupees if I can make a sale out of it. Maybe I'm in a position to, let's say, offer a 80,000 rent or 90,000 rupees rent to the owner, and then another 30%, because chai ka food cost is little less as compared to beverage. में अगर हम 15 रुपए की चाय बेच रहे थे तो it used to cost it 5 rupees, not more than that. तो वही 30% का thumb rule आ जाता था. तो we used to realize किया ठीक है मेरा costing इतना आ रहा है, इतना मेरा rentals है, इतनी मेरी मैन पावर लगेगी, इतना मैं प्रॉफिट बना लूंगा, एंड लेट्स से इतने महीने में मेरा ब्रेक इवन आ जाएगा. तो our
fundamental was that any store should break even between 15 to 20 months. अच्छा. If we invest in any store, it should break even between 15 to 20 months, not more than 2 years in any case. Is it a good time period, 15 to 20 months? Is it standard across food and beverages, or how does it look? So I think across food and beverages, generally anything between 24 to 30 months is standard. Okay. 24 to 30 months is standard. So generally अगर आप 9 साल की लीज लेते हैं, 9 year लीज पे आपने कोई शॉप ली है, इज अ थंब रूल 3 years 3 plus 3 plus 3, 9 साल के लिए आपने लीज पे लिया है, तो फर्स्ट 2 या 2.5 साल में आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी उसको लगाने की, अगले 6 साल आप कमाओगे. ठीक है. इस पे रिटेल इंडस्ट्री वर्क करती है इस थंब रूल पे. ठीक है. मैकडोनल्ड्स है, KFC है, फंडामेंटली ये ब्रांड्स मोटा मोटा इस पे वर्कआउट करते हैं कि 9 साल का लीज है, मैं 2.5 साल में रिकवर करूंगा कॉस्ट, बाकी के मैं कमा लूँ. So 24 to 30 months is thumb rule in industry में. That's an ideal case. For some cases it may go on beyond 3, but ideal case is 24 months to 24. But if I look at, as an investor, say I'm investing in a particular, setting up a particular food and beverage store, you said 2 साल में मेरा कॉस्ट रिकवर होता है, but 2 साल के बाद टिपिकली मेरे इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न रेट क्या होता है? So it's depend upon कि आपने कितने पीरियड के लिए लीज ये वो शॉप लिया हुआ है, आपके पास राइट्स क्या है, आपके पास फ्रेंचाइजी है या आपका कंपनी ओन स्टोर है. अगर मेरा खुद का ओन स्टोर है दैन इट इज गुड. अगर मैंने किसी की फ्रेंचाइजी ली है तो आई हैव टू पे रॉयल्टी ऑल्सो, तो मैं कैसे रिकवर करूंगा वो कॉस्ट. तो इसमें मल्टीपल डायनामिक्स प्ले करता है. तो अगर आप देखो कि अगर मैं 2 साल में या 2.5 साल में अपनी कॉस्ट रिकवर कर रहा हूँ और अगले 9 साल की लीज है और उतने टाइम पीरियड के लिए मेरे पास है, तो मैं देख रहा हूँ कि अगले इस पूरे पीरियड में मेरा पैसा 3x हो गया. In 9 years it is 3x. So at the end of the day, every 2.5 months I am making x of whatever I am doing it. तो अगर मैं उसको कैलकुलेट करने लगूँ तो मैं 33% का रिटर्न ले रहा हूँ, which is very good for an investor, because मार्केट में अगर आप बैंक में डाल रहे हो तो 6 से 7% है. If you invest in a good mutual fund and give you great returns, and not more than 15 to 20% in any case. So I think 33 to 40% return is a great return. And if that is happening, then I mean it's a good situation. For franchisees, it is tricky that you have to take a franchisee, then probably you have to pay the royalty also. So then franchisee will break even in 3 months, let's say. And I've seen a lot of stores, I don't know, couple of places I think we made a break even in 6 months also. In couple of places we made a break even in 3 months also. I mean, God was little kind and we chose the right location. So I mean, it's a very subjective, but thumb rule is the same, that you get 33 to 40% returns. At least I got to know the cost of, tea here, because this is, I think, this is always a subject in engineering days. जब हम अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में किसी एक ठेले वाले को देखते हैं, हम हमेशा कहते हैं यार इसके दूध का खर्चा तो इतना ही है, बाकी तो कमाई है. अब मुझे पता चला कमाई है कितनी इसमें. ट्रू. ये देखो, एक चाय वाला जो खड़ा है उसको रेंट नहीं देना पड़ता, बट उसको पुलिस को कहीं तो कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना पड़ता है, बिकॉज इट्स नॉट दैट लीगल टू पुट अप अ ठेला. सो आई मीन सबकी अपनी कॉस्ट है, बट द मोर यू मेक द बिजनेस ऑर्गेनाइज, द कॉस्ट स्टार्ट्स स्केलिंग अप, बिकॉज इट्स एन IT कॉस्ट. अभी ठेले वाला तो सीधा आपसे पैसा लिया रख लिया, वी हैव टू पुट अप अ पॉस मशीन विच विल ब्रिंग अ बिल, राइट. वो बिल मैं आपको दे रहा हूँ, उसकी कॉस्ट है मशीन की, फिर रोल की कॉस्ट है जिससे बिल निकलता है. इफ यू कीप सीइंग दैट, द मोर यू ऑर्गेनाइज द बिजनेस, द स्केल ऑफ द कॉस्ट गोज अप. सो इसलिए वो उतना चैलेंजिंग बनता रहता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके मार्जिन इतने होने चाहिए कि इस कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं. अदरवाइज अगर आप बिल्कुल ही प्योर प्ले बहुत सस्ता भी बेचोगे, कहोगे कि मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ, बट ये कॉस्ट रिकवर नहीं होंगी, सो इट विल नॉट मेक अ गुड बिजनेस सेंस एट द एंड ऑफ द डे. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपका कॉस्ट क्या है और उसके अगेंस्ट आप क्या रिटर्न बना सकते हो. धंधा ही वही है कि कितना लग रहा है, कितना जा रहा है सिंपल है. Of course. I think there is also a regional factor attached to, Meri Wali Chai. As I've observed, because I come from West Bengal, वहाँ पर चाय में दूध कम होती है, या इनफैक्ट लाल चाय या ब्लैक टी जिसे हम कहते हैं, people prefer that over other things. नींबू चाय और lemon tea, people prefer that over others. But as I move towards north, especially towards Punjab, Rajasthan, it's like full milk and then bit of tea, Right. and
did that also played a role in standardizing process और जहाँ जहाँ आपने खोला वहाँ पर उसको tweak करने पे? Right. There was always a challenge like that. जब हमने fundamentally इसको रियलाइज किया कि यार आप अगर पंजाब में जा रहे हो वहाँ पे दूध ज़्यादा चाहिए, और अगर आप नॉर्थ में हो तो वहाँ पे इस तरह की चाय चाहिए, अगर आप साउथ में जा रहे हो तो आपका डिफरेंट वर्जन ऑफ चाय है. वी ओपन अ स्टोर एट मुंबई एयरपोर्ट. द मुंबई हैज़ अ डिफरेंट वर्जन ऑफ चाय विच इज़ कड़क चाय. वहाँ पे पानी थोड़ा सा ज़्यादा होगा, दूध हल्का कम होगा, बट उनको कड़क चाहिए या आपको नहीं चाहिए. ठीक है, तो दैट वाज ऑलवेज अ चैलेंज. तो वी यूज्ड टू गो टू द प्लेस, अंडरस्टैंड कि यार यहाँ पे चाय का क्या पोजीशनिंग है, किस तरह का चाय यहाँ पे ज़्यादा अच्छा लोगों को लगेगा. एंड देन वी ऑल्सो केप्ट एन ऑप्शन कि यार आप बता दो आपको कैसी चाय चाहिए. तो वी यूज टू आस्क कि मैम थोड़ा कड़क बनानी है, व्हाटएवर इट इज. एंड देन वो से हाँ, चूंकि हमारी हर ऑर्डर कस्टमाइज था, हमारा बल्क में बना के रखने वाला सिस्टम नहीं था. We never used to make tea, put it in the container and then dispense it. No. Every order was a customized order. So then we realized that it is very important to understand people's version of their own chai and give them their own chai if they like it. So it was always said, and this is not a challenge with chai. Let me be very honest. This is challenge with every food in India. That आप पराठे यहाँ खाओगे अलग है, पंजाब के पराठे तंदूरी और मक्खन से हो जाते हैं. आप कानपुर में जाओगे थोड़े तले हुए, चांदनी चौक में जाओगे कचौरी बना के दे रहा है, साउथ तक के पराठे अलग है. तो किसी भी फूड को आप लो, इंडिया इज सच अ बिग स्कैटर्ड मार्केट विद so much of religion, so much of, I mean, different version of, ethnicity, that every time you take a product, you can't standardize it. You have to tweak here and there with that thing. आप गुजरात की दाल लोगे उसमें थोड़ा चीनी मिल जाएगा, ऐसा हल्की मीठी दाल. आप पंजाब की दाल लोगे तो उसमें मक्खन बहुत मिलेगा, नॉर्थ में जाओगे तो मसाले बहुत मिलेंगे. तो दिस इज विद एवरी फूड in India that you cannot standardize it. It's very difficult to standardize food in India. Very scattered. Everybody has their own version of everything. Interesting, Pankaj. That brings me to a question. We have seen a lot of foreign food brands coming to India and scaling up so well, while our own Indian food items cannot be standardized. And one of the reasons I'm feeling while speaking to you right now, it's because the taste of these food items has been so specific to us and so specific to places. Like, we take a specific food in Delhi and the same food will taste so different in Mumbai or Bangalore. Now, do you think one of the most prominent reason why there are less of Indian food brands or Indian standard, food brands like, pizza or McDonald's or, anything like that? What's your take on this? So I tell you, you have nailed it very rightly. What happens that in India, every food has their own versions. If you talk about paratha in Punjab versus a paratha in Delhi versus a paratha in East versus a paratha in West is very, very different. You talk about momos. Momos in East are very different. Momos in Delhi, surprisingly, I came across a guy and I ordered him some veg momo and then he started asking veg mein kya? And I said, yaar, veg momo. In veg mein tandoori ya plain? मैंने कहा तंदूरी दे दो. Then he says दाल मखनी तंदूरी है non. What? दाल मखनी तंदूरी. So now that veg momo is in a gravy of dal makhni and then he said and say that's a dal makhni momo. ये तो नया है. Yes. So you go, if you see sambar, especially in South also, Karnataka dosa is little different, the sambar is different. The Tamil Nadu, the dosa is different, the sambar is different. So if you talk about any product in India, everybody has their own version of, that thing. So it is very difficult to standardize the product one and then scale it in terms of, you don't have to give so many SKUs in terms of, let's say, pizza or McDonald's, a burger. So these guys came from outside India and they said, bhai, ye hai tumhara pizza, ye hota hai pizza. And everybody said, acha, ye hota hai, theek hai. Now nobody wants to challenge it. But interestingly, you will see now that McDonald's has done something very interesting, that they have launched basically one wrap in West, which says masala dosa flavor something they have incorporated into it, but still it's a wrap and something like that. But overall, 99.9% the product is same everywhere. Pizza is a pizza. It's in Chennai, the pizza is still this Domino's pizza is same pizza. They don't do any tweaking around it. The same happens as North, the same happens as this. So that's why it's easy to scale these stuff. In India, it is very different. The moment you say, I want to scale this thing, then suddenly somebody sitting in there will not accept it. In another part of the country, that this is not my taste.
change it or I won't have it. So that is one of the reasons that Indian brands are not that successful as compared to this foreign brand, because their acceptability in terms of the product is very much there. KFC का बस यही होता है चिकन, ऐसे ही होता है चिकन, बस यही होता है, उन्होंने बोल दिया, सबने एक्सेप्ट कर लिया, वही चल रहा है। जब आप हमारे यहाँ बनाओगे चिकन तो आपका चिकन अलग है, बटर तंदूरी चिकन अलग है, बटर चिकन अलग है, तो उसमें चिकन की हम इतनी वैरायटीज निकाल देंगे कि पूछो मत। बट उन्होंने तो एक ही वैरायटी निकली हुई है, यही है। तो दैट इज, आई थिंक यू हैव नेल्ड इट वेरी राइट, एंड दैट इज वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्केल इंडियन brands. Wow, that's so insightful. Yeah. So now, Pankaj, let's talk about one of the, I think, most important aspect when building a business, which is hiring and building the culture. Especially when you are in a consumer business, it becomes very important to have that customer obsessed culture across team. But I've always wondered how a brands, or especially retail brand, ensure such kind of customer obsession at last milestone, which is the person sitting at the kiosk or person sitting at the QSR. So let's start with, how did you hire people? How did you build that culture? So I think in retail or let's say any business, when you hire people, you have to be very thorough of your culture of the organization, and in what aspect, in what particular department you are hiring that guy. That is very important. So I'll tell you, there's a spiritual story behind this. So there was this sadhu sant which was going around and he wanted some water. तो किसी के घर पे गए, उन्होंने कहा माता प्लीज थोड़ा पानी दे दो, एंड दैट लेडी वाज बीटिंग हिज किड, कोई बदमाशी करके आया हुआ था वो, तो उन्होंने कहा बाबा 2 मिनट बैठो, इसने बहुत परेशान किया हुआ है, अभी देती हूँ पानी। एंड शी वाज वेरी एंग्री ऑन द किड एंड पूरा गुस्से में उसको मार रही थी। एंड आफ्टर दैट शी ब्रॉट सम वाटर, उनका लो बाबा। एंड देन बाबा सेड मैं तो ये पानी पी नहीं सकता। उसने कहा क्या हुआ बाबा? आरओ का फिल्टर वाटर है, और क्या चाहिए? बोलता नहीं पानी सही नहीं है। तो उसने कहा नहीं बाबा पानी तो सही है। उसने कहा पियो। तो द लेडी हैड दैट सिप ऑफ द वाटर एंड देन शी सेड पानी तो ठीक है बाबा। उसने कहा एक मिनट मुझे दो। एंड देन बाबा टुक दैट वाटर, केप्ट इट इन हिज हैंड फॉर सम टाइम बीइंग, एंड उन्होंने वापस उनको दिया, बोला अब पियो। उसने जैसे पिया ना, शी स्टार्टेड क्राइंग एंड शी सेड पापा, मतलब बाबा ये तो पानी बहुत मीठा हो गया। तो बाबा सेड जब आप उसको मार रही थी, जब आप गुस्से में थी, तो आपकी वही एनर्जी पानी में चली गई। माँ का हाथ का खाना इज वाई सो डिलीशियस, कि मम्मी के हाथ का खाना अच्छा लगता है, बिकॉज माँ जब बना रही होती है ना, बहुत शिद्दत से बना रही होती है, मेरा बेटा आएगा खाएगा, माँ का प्यार होता है। माँ इज नॉट वेरी ग्रेट कुक, बट माँ का खाना हमेशा अच्छा लगता है बिकॉज वो शिद्दत जाती है उसमें। तो दिस इज अ वेरी फिलोसफिकल साइड विच आई फंडामेंटली ऑल्सो बिलीव। तो वी रियलाइज यार अब हम इसको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे, कि हमारा एक रूल बना कि यार इफ समबडी हैज अ बैड मूड, कुछ भी इशू है हल्का फुल्का, वो बिलिंग पे जाएगा कस्टमर से या कुछ और काम कर लेगा, बट चाय नहीं बनाएगा। चाय वही बंदा बनाएगा जिसका मूड ठीक है और जो खुशी से बना रहा है। और चाय आप किसी को दे रहे हो यार, लोगों की थकान मिटती है। चाय इज लाइक इज अ लाइक एनर्जी, और वो बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। तो वी यूज्ड टू से कि यार किसी का मूड खराब है, वो चाय नहीं बनाएगा, चाय वही बनाएगा जिसका मूड अच्छा है। तो हमारे टॉस पे वी आर वेरी श्योर अबाउट इट, लेट्स इनकॉर्पोरेट दिस। एंड ये होता था कि हमारे यहाँ पे हम लोग कोशिश करते थे कि ये जिसका अच्छा मूड है या चाय बनाते हुए, तो हमारा था कि यार आप गाने सुनो चाय बनाते हुए। तो वी केप्ट अ स्मॉल रिकॉर्डर देयर कि गाने सुनते रहो, अच्छा म्यूजिक चलना चाहिए, चाय बनी, अच्छी चीज बनाओ, अच्छी दिल से खिलाओ, दैट इज इम्पोर्टेंट, बाकी सब इमेटलाइज है। सो देन वी रियलाइज दैट इंटरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैकडोनल्ड्स में एक मेरे ब्रदर के बहुत अच्छे बड़े भाई मेरे, उनके बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड थे, यूज्ड टू वर्क विद मैकडोनल्ड्स, अभिनव भैया। ही उन्होंने काफी गाइड किया हमको। एंड देन वन डे इन एन इंटरेक्शन ही टोल्ड अस दैट यू नो व्हाट इज द फंडामेंटल ऑफ हायरिंग एट मैकडोनल्ड्स। मैंने कहा बताओ भैया व्हाट इज इट? ही सेड वी हायर स्माइल। ओके, तो वी ओनली हायर पीपल हु आर स्माइलिंग ऑलवेज, बिकॉज जब आप गए हो, कोई कस्टमर आ रहा है आपसे एंड यू आर नॉट स्माइलिंग, यू आर जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस, क्या लोगी? बर्गर देता हूँ मैं। एंड सडनली सर विल यू हैव सम बर्गर? ग्रेट, अभी मंगवाता हूँ। नो यू सी द एनर्जी इन द स्माइल एंड इंटरेक्शन, आपका बर्गर खाने का मन भी कर गया। दैट इज वेरी क्रूशियल। तो एवरी कंपनी हैज देयर ओन कल्चर। सो मैकडोनल्ड डिसाइडेड वी विल हायर स्माइल, nothing else. This is our fundamental, because the customer interaction is there.
rest is secondary. So any person who is not jovial or is will not pass through that exam. So our hiring was more centered around smile and a pleasing personality to the customer in that hospitality, and that's a fundamental for hospitality. Everywhere around it is same. That was our way of hiring people. And from a culture point of view, when we used to hire somebody, we used to make him learn that why we are giving chai, that is spiritual story we used to share with this guy. And that onboarding has to be in a way that that he is aligned that हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं, it's a good work, उनको एनर्जी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो अच्छे से करना है, दिल से करना है, दिल से काम करेंगे. So that sort of culture was there in the company, and that's how we used to think on this framework of hiring, hires mind. Wow, that's very interesting. And you mentioned a very important aspect of building a culture, but often the question for us as a founder is, how do we really identify these traits during interview? This one can be, you mentioned, look at the smile, etc. But were there certain questions which helped you evaluate a person better from these hospitality perspective, or some frameworks that you used during the interview to ensure you're hiring the right person? Okay, so I'll give an example. So my first store manager, I mean operation head, was Maninder. I had Maninder. So Maninder used to work with this brand called Chai Point. Okay. So I wanted to hire somebody senior. So I went to Chai Point and वहाँ पे जाके मैंने चाय ऑर्डर किया and I started yelling on everyone. मैंने कहा क्या बकवास चाय यार, किसने बनाई है, क्या यार इसमें ये गिरा हुआ है, वो गिरा हुआ है. Started yelling and I look at everyone around कि कौन आ रहा है, कौन react करेगा इस पे. यार अगर कस्टमर गुस्सा है तो let's say, तो he came, sir please have a seat, आप बैठो सर, please tell me क्या हो गया. तो he started taking that initiative. उसने मुझे बिठाया और जैसे उसने कहा सर आप बैठो, आप मुझे बताओ क्या हुआ है, I decided इसको हायर करना है भाई. क्लियर है. अब इन सब में ये बंदा है जो आगे भी ध्यान रखेगा कस्टमर का और ऑपरेशंस को ठीक ठाक. आई थिंक ये सबसे इनोवेटिव हायरिंग जो मैंने सुनी है. तो हमने कहा यार इसको हायर करना. तो जब भी मुझे कोई बंदा हायर करना होता था तो क्वेश्चन आंसर इंटरव्यू से ज्यादा मैं एक्सपेरिमेंटल जाता था, बिकॉज मुझे ये देखना था कि यार इसका इंटरेक्शन कस्टमर से क्या है, या ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये काम कैसे कर रहा है. तो आई यूज्ड टू ऑब्जर्व. तो ऑब्जर्विंग वाला फैक्टर रखते थे हम लोग. तो मैंने जितनी भी हायरिंग करी है रैंडम इसी बेसिस पे करी है कि यार ये बंदा इसमें सही लग रहा है तो इसको कर लेते हैं. दैट वाज द ओनली फ्रेमवर्क, नेवर एनी इंटरव्यू और अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. बिकॉज मुझे लगता है कि यार वो सब आपका एक नोशन होता है, आपके प्री कंसीव नोशंस होते हैं. आप सोच रहे होते हैं कि यार इसके इस आंसर से मैं इम्प्रेस हो जाऊंगा, इसका ये आंसर होना चाहिए, ये ठीक है तो सही है. पर किसी का भी कोई सही गलत आंसर नहीं होता. तो आई रियलाइज यार इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू व्हेन हायर देन सी कि यार जो क्वालिटी आप उसमें देखना चाह रहे हो वो उसके अंदर इनबिल्ट है या नहीं है, अंदर से है नहीं है. अब ऑपरेशन वाला बंदा वही होगा जो सुबह शाम देख रहा है, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, वो ऑपरेशन का बंदा है. जो बातें अच्छी कर रहा है वो सेल्स का बंदा है. जो क्रिएटिव है तो उसको क्रिएटिव साइड ले जाना है. तो उनको हम ऑब्जर्व करके हायर ज़्यादा करते थे. तो वो वाला फ्रेमवर्क पे ज़्यादा फोकस रखा हम लोग. इंटरेस्टिंग. अब लास्टली फोकसिंग ऑन इस पूरी जर्नी को, एक बिजनेस बनाने की जो आपकी जर्नी थी, एक जीरो से स्टार्ट करके एक 36 स्टोर्स आपने कहा स्केल तक लाने के पीछे आपकी कई सारी लर्निंग्स हुई होगी, कई एक्सपीरियंसेस होंगे. बट अगर मैं अभी आपसे टॉप लर्निंग्स पूछूं जो आप शायद दूसरे एंटरप्रेन्योर्स या दूसरे बिजनेस लीडर्स के साथ शेयर करना चाहूँ, वो क्या होंगे? ओके, तो आई थिंक सबसे जब धंधा बिल्ड करते हैं तो कुछ लर्निंग जो बहुत क्रिटिकल थी और जो मुझे लगा कि बहुत क्रिटिकल है. तो द फर्स्ट वन इज दैट आई बिलीव दैट पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न. वी वर वेरी श्योर कि यार हम कुछ आलतू फालतू खर्चा नहीं करेंगे. पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न बिकॉज लिमिटेड रिसोर्स थे हमारे पास, फंडिंग बहुत ज़्यादा थी नहीं. शुरू भी बूट स्ट्रैपिंग से ही किया था दोस्तों के साथ मिलके. तो वी रियलाइज यार दैट हम लोग कोई आलतू फालतू खर्चा नहीं करेंगे एंड वी विल जस्ट इंश्योर कि जहाँ पे पैसे बचा सकते बचाएंगे एट द एंड ऑफ द डे. तो पेनी सेव्ड इज पेनी अर्न. आपने जितना पैसा बचाया कायदे में उतना आप कमा रहे हैं. तो ऑलवेज हैव अ फ्रूगल अप्रोच. मुझे लगता है कि वो जुगाड़ और फ्रूगल अप्रोच लाइफ पे ज़्यादा ज़रूरी है. जस्ट थ्रोइंग मनी, गेटिंग रिसोर्सेस
विल नॉट सॉल्व योर प्रॉब्लम एट ऑल। फंडामेंटली लोगों को लगता है यार मैं एक बंदे को और ले आऊंगा, हायर कर लेता हूँ, ये मेरा ऑपरेशन देख लेगा। ऐसा नहीं है। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क फ्रूगली एंड विद जुगाड़ माइंडसेट। जुगाड़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जुगाड़ से चलना जरूरी है। अब हमारा जो आई थिंक वेयर हाउस हमने लिया, वो वेयर हाउस थोड़ा सा बड़ा हो गया, सामान आधे में ही आ गया, तो हमने आधे को अपना ऑफिस बना दिया। हमने नया ऑफिस लिया नहीं कहीं, हमने जहीं पे एक ऑफिस लिया हुआ था तो उसको बोला कि मैं नहीं चाहिए, हमने उससे डिपॉजिट वापस ले लिया। तो मुझे लगा यार वेयर हाउस में हम सेट हो रहे हैं अभी, ठीक है, तो फालतू के खर्चे करके क्या करना है। तो मुझे लगता है जब आप धंधा बिल्ड कर रहे हो शुरू में, तो पैसे को सही जगह से खर्चना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव दैट फ्रूगल एंड जुगाड़ माइंडसेट इंस्टेड ऑफ throwing money and getting people and getting resources. That is the learning which I fundamentally believe is very important. Second is you hire right people. कई बार क्या होता है कि आप सही बंदे हायर नहीं करोगे तो फिर वो आपका काम खराब ही कर देंगे। तो आप जब धीरे धीरे स्केल कर रहे हो या ग्रो कर रहे हो तो आपको अपनी टीम बहुत सॉलिड बनानी पड़ती है। तो जैसे मैं ऑपरेशंस में मनिंदा था, आई वॉज नेवर वरीड अबाउट ऑपरेशंस, मुझे देखने जाना ही नहीं पड़ता था। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, प्यार से बात कर लेता था, कोई लड़ाई कर लिया किसी एम्प्लॉय ने, एक दूसरे के साथ जाके चुपचाप प्यार से उनको सुलझा देता था। तो मुझे लगा कि यार ये सब न्यूसेंसेस में अगर मैं घुसूंगा इट विल ऑल्सो कंज्यूम माई टाइम, एनर्जी, एवरीथिंग, एंड वो आउटपुट में उतना दे भी नहीं पाऊंगा जितना मनिंदर दे रहा है। तो मे बी मनिंदर इज द राइट पर्सन टू हैंडल एम्प्लॉयज ग्रीवेंसेस। तो आई विल नेवर गेट इनटू एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस even though I was the founder and I was supposed to be, but I never went into it. So I realized it is very important to hire right set of people for the right job. Always work with a frugal mindset and jugaad mindset when you're starting a business. देखो लर्निंग अलग अलग बिजनेस के स्केल पे आपकी अलग अलग लर्निंग आएगी। जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब आपके लिए ज़्यादा चीज़ें मैटर करती है कि आप जुगाड़ से स्टार्ट करो। जब आप मैच्योर्ड कंपनी हो जाते हो तो आपको सिस्टम्स बिठाने चाहिए, सिस्टम्स बिठाओगे तभी स्केल कर पाओगे। तो हर स्केल पे आपको अलग अलग लर्निंग है। हमने जब स्टार्ट किया तो शैसे फ्रूगल और जुगाड़ माइंडसेट, बिकॉज हमें वैल्यू कॉन्शियस बनना था। तो वैल्यू कॉन्शियस बनने के लिए पहले अपने अंदर ही वो वैल्यू लानी भी ज़रूरी थी। तो मुझे लगता है वो जुगाड़ माइंडसेट और फ्रूगल अप्रोच एंड हायरिंग राइट सेट ऑफ पीपल फॉर द राइट जॉब, ये दो लर्निंग बहुत क्रिटिकल थी हमारी जब हमने धंधा बिल्ड किया। दैट वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद हमें ये भी रियलाइज हुआ कि यार एट अ टाइम यू ऑल्सो नीड मनी टू रन द बिजनेस। बिजनेस स्केल करना है, एक्सपैंड करना है तो पैसा चाहिए होता है। अब इट्स जस्ट लाइक यार यू कुड बी वेरी पैशनेट अबाउट fighting for your country, but when you go to that zone of war you need a rifle, you need a helmet so that it doesn't hit your body, right? वो सारे वो सब चाहिए, आपको एमिनेशन चाहिए ना। आप तो ये तो नहीं कहते तो मैं तो देश के लिए पागल हूँ, चाकू लेके आप नहीं थोड़ी सरहद पे चले जाओगे। तो आई थिंक कोई भी बिजनेस मुझे लगता है 2 साइकिल से निकलता है। कभी आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा, कभी आपको इफेक्टिव बनना पड़ेगा। इन 2 में आपको चूज करना पड़ता है कि यार मैं इस वक्त क्या बनूं, इफेक्टिव बनूं या एफिशिएंट। हर एक बिजनेस की एक लाइन होती है, मतलब साइकिल है। जब आप स्टार्ट करते हो तब आपको इफेक्टिव रहना है कि यार ठीक है सारे काम ठीक ठाक हो जाए, बस ये नहीं है कि इसमें बहुत नंबर आने, बस ये काम शुरू हो जाए, स्टार्ट। एक बार वो चीजें हो जाती है, प्रोडक्ट बन गया, कस्टमर आ गए, अब आप सोचोगे यार एफिशिएंट बनना है, कस्टमर का एक्सपीरियंस इंप्रूव करेंगे अब, ठीक है। सेल्स टीम को और हायर करके और डीप पे जाएंगे और उनके लिए सीआरएम लेके आएंगे कि उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव हो। तो अब आप उसको एफिशिएंट बना रहे होते हो। फिर जैसे ही वो हो जाता है तो आपको लगता है यार अब ग्लोबली जाना है, तो नए सेटअप करते तो फिर से आप इफेक्टिव होना शुरू हो जाते हो। तो मुझे लगता है कि द बिजनेस विल ऑलवेज रन इन 2 मोड, आइदर बीइंग इफेक्टिव और बीइंग एफिशिएंट। यू डिसाइड कि आपकी इस तरफ इस वक्त क्या रिक्वायरमेंट है, यू वांट टू बी इफेक्टिव और यू वांट टू बी एफिशिएंट। तो अब आप सरहद पर हो, फॉर एग्जाम्पल ये मुझे बड़ा अच्छा ये कॉन्सेप्ट समझाया था अरविंद उप्पल जी ने। ही वाज चेयरमैन एंड एमडी फॉर वर्लपूल इंडिया। ओके, बहुत अच्छी उन्होंने बताई कि जब आप सरहद पर हो, अकेले हो और वहां से 50 लोग आ रहे हैं आतंकवादी, आप क्या करोगे? आप यूज करोगे मशीन गन। गोलियां कितनी वेस्ट हो जाए लेकिन वो सब मरने चाहिए, कोई अंदर ना जाए। तो आपको इफेक्टिव रहना है फिलहाल, डाल दो रिसोर्सेज, इफेक्टिव बन जाओ। वहाँ एफिशिएंसी से इफेक्टिवनेस। हाँ, अब आप सोचो मैं स्नाइपर लूंगा, सबके सर पे मारूंगा एक एक करके, इतने में तो निकल जाएगा भाई। नहीं तो यू हैव टू बी इफेक्टिव देयर। समटाइम यू विल सी कि 1-2 जा रहे हैं, दूर से ले निशाना लगा के उसको मार रहे हैं, तो ठीक है मेरे को यहाँ पे एफिशिएंट बनना है, क्योंकि मेरे पास उसको मारना है, जो कि वो छुपे छुपे है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके बिजनेस जो चल रहा है वो किस साइकिल में है।
आपको इस वक्त एफिशिएंट होना ज़्यादा ज़रूरी है या इफेक्टिव होना ज़रूरी है? बिकॉज इफेक्टिव हो गए, अब आपने देखना है कि यार मैंने स्टोर तो खोल लिया, अब इनकी स्केल को बढ़ा के या इसकी स्टोर की सेल्स बढ़ा के इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ानी है, तो अब आपको एफिशिएंट बनना पड़ेगा। जब स्टोर खोल रहे हो तो इफेक्टिव बनना पड़ेगा। तो आपको इसी बीच चूज पिक इन करना पड़ेगा, एंड दिस इज एन आर्ट। यू हैव टू अंडरस्टैंड वेदर यू वांट टू बी इफेक्टिव और यू हैव टू टेक बीइंग एफिशिएंट। ये दो आपको चॉइसेस को मेक करना है। दैट वाज बिजनेसेस, दैट इज व्हाट माय की लर्निंग। Wow. So Pankaj, our EOD question of the show is, how do you see the future of this industry? Chai business, the quick service restaurant, how do you see it shaping up in coming times? So I think the future of this business is great. At the end of the day, if you look at the consumer side, then people are looking for choices. They're looking for new options to try. Dine out is has escalated, or let's say dine out has grown over a period of time like anything. Initially, it used to be in, let's say, Singapore, it is 5 days a week people dine outside. In India, it is still 1.2. Imagine when it goes to 3 or 4. So it is a 3x and 4x sort of growth you will see, that people go outside and they will dine. I'll give you an example. So there was this guy in Spain. So this guy, he realized that now women have entered into, let's say, workforces. I mean, they are also going to factories. They are also started working. Now they यही anticipated, यार अब तो औरतें भी काम करने लगी हैं, तो अब घर आके खाना तो नहीं बनाएंगी, थकेंगी, तो they want a light dinner. So he started telepizza in Spain. Okay. 10 years down the line, he had 1,000 restaurants and $1.2 billion business. Wow. So he could anticipate that. Yeah. Now, if you look at today's scenario in India from a consumer point of view, I mean Generation Z, so consumerism on rise. Population is on rise, consumer is on rise. No, people are looking for good options, good experiences, good food. They want to try it outside. Eating outside is like, in Delhi, it is still 2.2. I think more than the average of India, because tier 2 में अभी भी लोग इतना ज़्यादा बाहर नहीं कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि यार अभी QSR का तो बहुत स्कोप है। बिजनेस विल ग्रो लाइक एनीथिंग। चाय तो इंडिया में कंज्यूम ही इतनी होती है कि आप पूछो मत, क्या बहुत स्कोप है। इफ़ यू ऑर्गेनाइज इट इन द राइट मैनर, देन आई थिंक फ्यूचर बहुत ग्रेट है इस इंडस्ट्री का। एंड आई थिंक यस, प्रॉमिसिंग है, काफ़ी प्रॉमिसिंग। Interesting. So thanks Pankaj. I think I had one of the most interesting conversation today. Got a lot of insights around how this Chai Thela business, how a chai wala works. But more importantly, I think, I was more amused at the whole cultural part of it. How did you build the business? And you built an amazing business. Thanks for being on the show. Thanks for, spending this time and sharing your insights with our audience. Thank you, Ankit. Thank you so much.